Good morning, dear student of class 8th. Myself Pradeep Dubey is your science teacher. Dear student, I will teach you chapter 9, reproduction in animals. As you know, reproduction is very necessary process which is very essential for to sustain life process. This is a life process. So student, get ready to study reproduction in animal. How does it? So first try to understand what is reproduction. Production of new organism from existing organism of the same species is known as reproduction. Right? हाँ, नए ऑर्गेनिज्म का जो है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए स्पीसीज सेम स्पीसीज का उत्पन्न होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. इन मोस्ट सिंपल वर्ड वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द सर्टेन ऑफ न्यू थिंग्स लिविंग थिंग्स. ये जो है निश्चित होता है. एक्चुअली वन ऑफ द रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ. हाँ, रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है, आवश्यक है स्पीसीज़ का जो है सर्वाइवल कर सकें. अगर किसी सपोज अगर कोई एनिमल्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो वह उस जनरेशन के बाद अपने अगली जनरेशन उस स्पीसीज़ की नहीं होगी. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. Reproduction by human being ensure that human species will continue to exist on this earth for all time to come. Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their plant. Right? Newly born animals या newly hatched animal is called young ones. Young ones हम उसे कहते हैं जो newly होते हैं. यहाँ पे हम There are many different ways in which new organisms are produced from their parents. Some organisms like amoeba just split into two parts to produce a new amoeba. Some organisms like hydra grow out of a parent's body from a bird, and after some organisms like bird snake hatch out of the eggs laid by their parents. तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देयर आर टू मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसमें दो मेन रिप्रोडक्शंस होते हैं. पहले की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. The production of new organisms from a single parent without the involvement of sex cell is called asexual reproduction. मतलब this process takes without involvement of sex cells from a single parent. Right? जैसे in asexual reproduction only one parent is needed to produce a new organism. Some of the example of asexual reproduction: binary fission in amoeba, budding in hydra, etc. Fragmentation in Spirogyra, regeneration planaria. Please, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स is called sexual reproduction. In sexual reproduction, sex cell of one parent fuse with the sex cell of other parents to form a new cell called zygote. This zygote then grow and develop to form a new organism. In sexual reproduction, two parents are needed to produce a new organism. The two parents which are involved in sexual reproduction are called male and female. Male and female parents have a special organs in them which produce male sex cells and female sex cells respectively. Human, fish, frog, cat, dog all reproduced by the method of sexual reproduction. In sexual reproduction, the young ones produced is not an exact copy
एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, जबकि असेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, राइट। और मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, इस टर्म्स को समझने के लिए, आवर फादर इज़ मेल एंड आवर मदर इज़ फीमेल, वी कैन आल्सो से दैट, हम यह भी कह सकते हैं कि that our father has male sex and mother has female sex. Now our father is man or our mother is woman. This means man is male and woman is female. Man is said to have male sex and woman is said to have female sex, just like us human beings. Other animals also have male and female sexes. As we all learn after while being a male and female depend on the type of sex cells in one's body. Animals having male sex cells called sperm in its body is called male, and on other hand an animal having female sex called eggs ova in its body is called female. We will now discuss gamete. गैमीट क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मेल सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स. दिस सेक्स आर आल्सो नोन बाय अदर नेम इज कॉल्ड गैमीट. सेक्स गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट. सेक्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट. जैसे द मेल गैमीट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इन एनिमल्स इज कॉल्ड एग. स्पर्म क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. जैसा आप मैंने बताया कि मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म. द स्पर्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल्स, वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी दैम. अ स्पर्म अबाउट 0.05 millimeter long. अ हाईली एनलार्ज स्केच ऑफ स्पर्म इज शोन इन फिगर. यहाँ पे देखिए हाईली एनलार्ज है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया है. वैसे जनरली हम इसको देख नहीं सकते हैं. A sperm has a head, a middle piece and a tail. आप देख रहे हैं. Eggs क्या होता है? The sperm move by waving its tail. Sperm जो है मूव करता है अपने टेल को मूव करता है, राइट. Eggs की बात करें या ओवा की, eggs ओवा are also very small. We need a microscope to see them. Eggs are however much larger than the sperm. स्पर्म से ज़्यादा लार्जर होते हैं. ओव्यूम राउंडेड होते हैं. About is also a single cell having nucleus. इसमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. एंड इसके बारे में बात करें तो द न्यू सेल विच इज़ फॉर्म by the fusion of male gamete and a female gamete is called zygote. When male gamete and female gamete fuse together, they form zygote. Now this is the terms of fertilization. Fertilization क्या होता है? Fusion of male gamete and female gamete is called female gamete to form a zygote during a sexual reproduction is called fertilization. Since male gamete of an animal is called sperm and female gamete of an animal is called egg, fusion of sperm with the egg or ovum to form zygote during sexual reproduction is called fertilization. Zygote is actually a fertilized egg. In human being, the process of fertilization is meeting of sperm cells from the father with an egg cells from the mother to form a fertilized egg is called cell zygote. जैसा आपको देख रहे हैं, दिस इज स्पर्म, दिस इज एग. व्हेन फ्यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पर्म एंटरिंग एग. यहाँ पे देखिए फ्यूज कर गए, टेल ऑफ स्पर्म लेफ्ट आउट. दिस न्यूक्लियस sperm fuse with the help of nucleus from egg. इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है उनके बॉडी के इनसाइड होते हैं, कुछ लोगों को होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बाहर बॉडी के बाहर होते हैं. ओव्यूम इज मेड इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनिमल, सो द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग
by sperm can take place either inside the body of female animals or outside of the body. This led to two modes. Fertilization, which takes place inside the female body, is called internal fertilization. Female eggs laid are fertilized by sperm inside her body. In internal fertilization, male animal put his sperm into the female animal's body, and these sperm then fertilize the egg inside her body. After this, these sperm then fertilize the egg. These types of fertilization, in which fusion of male gamete and a female gamete occur inside the body of फीमेल एनिमल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें बहुत से एनिमल्स आते हैं जैसे काऊ, ह्यूमन, काऊ, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, रैबिट, डियर, हॉर्स, बर्ड, hen, sparrow, crow, pigeon, reptiles such as lizard, snake, crocodile, etc. Insects such as silk moth, housefly, butterfly. In all these animals, fertilization occur inside body of female animal. Fertilization, yes, fertilization which takes place outside of the body is called external fertilization. In external fertilization, female animals' eggs are fertilized by sperm outside her body. In frog, most fishes, fertilization of eggs occur outside of the body animals. In external fertilization, male and female animals release their sperm and eggs in water, where fertilization takes place by collision between sperm and eggs. For example, male and female frog and fishes release their sperm and eggs in water in which they live. The sperm then collide, वो आपस में जो है collide करते हैं with eggs and fertilize them outside the body of female frog or fish. External fertilization is very common in aquatic animal. जितने भी जलीय जंतु हैं मोस्टली जो है उनमें यह कॉमन होता है, सच एज फ्रॉग, जैसे फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, etc. In these animals, fertilization takes place in water. We will now describe the external fertilization in frog in somewhat detail. Now we shall talk about sexual reproduction in animal. Sexual reproduction in animal. Sexual reproduction is most common method of reproduction in animals. In sexual reproduction in animals, there are two parents, male and female. The two parents have sex organs which produce sex cells or gamete. The male parents has organs called testes which produce male sex cell, while female parents has female sex organs called ovaries which produce female sex cell or female gametes. The whole process of sexual reproduction in animals involve the formation of sperm and eggs, joining together of sperm and eggs to form fertilized egg called zygote, and growth and development of zygote to form a baby animal. Sexual reproductions which takes place in the following steps, you can pay attention. The male parents produce male gametes called sperm, while female parents produce female gametes called eggs or ova. The sperm enter into the egg and the nucleus of sperm fuse with the nucleus of egg cell to form a new cell called zygote. This zygote is a fertilized egg. Zygote divide repeatedly. जाइगोट जो है डिवाइड कर होता रहता है और अपने आप को ग्रो करता है टू फॉर्म ए हॉलो बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. उसके बाद फोटस ग्रो, इसके एम्ब्रियो में फोटस आपका ग्रो करता है, डेवलप टू फॉर्म ए न्यू बेबी एनिमल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की अब अगर बात करें तो इन ह्यूमन beings there are special reproductive organs to make sperm and egg, to bring sperm and egg for fertilization and make a zygote.
and for the growth and development of a zygote into a baby. We will first describe the reproductive system of human, male and female both. We'll then discuss how reproduction takes place in a human. और तो मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात सबसे पहले करेंगे. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: टेस्टीज, स्क्रॉटल सैक्स एंड epidermis, sperm duct and seminal vessels and penis. The human male reproductive system is shown figure point. You can watch this here. Ureter, bladder, seminal vessels here, sperm duct which carry sperms, and it is epidermis. एथेले होते हैं, दो होते हैं. स्कॉरल सैक हियर इज टेस्टीज, इसको हम टेस्टीज भी बोलते हैं. एंड हियर इज पेनिस. दिस इज द human male reproductive system of human. The sperm formed in testes comes out and go into coiled tube called epidermis, and the sperm get stored temporarily in epidermis. From epidermis, the sperm are carried by a long tube called sperm duct into the organ called seminal vessels. The sperm get stored in seminal vessels, and seminal vessels join to another tube called urethra. Urethra coming from the bladder. Urethra carries the sperm into an organ called penis, which opens outside the body. Right? This is. Now we shall talk about female reproductive system. Human female reproductive system consists of following organs: ovaries, oviducts, uterus and vagina. The human female reproductive system is shown in figure 6. Figure 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे. Since human female is called woman, so we can also say that it is a reproductive system of woman. Ovaries are oval shaped. Oval shape का होता है ovaries. यहाँ पे देख सकते हैं ovaries. This is ovary and this is oval shape का होता है, इसीलिए हम इसको ovaries भी कहते हैं. Which are inside the abdominal cavity of women. जो abdominal cavity होती है वुमेन्स में, उसी के अंदर होते हैं. A woman has 2 ovaries. वुमेन के पास 2 ovaries होते हैं. Right? Ovaries are real reproductive organ in women. The female sex cells, female gametes called ova, are made in ovaries. Ovaries make the female gametes called eggs. Just above the ovaries are tubes called oviduct. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे oviduct है जो कैरी करता है ओव्यूल्स को. फैलोपियन ट्यूब्स होता है जिसको हम oviduct बोलते हैं. तो oviduct आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरीज. ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं ओवरीज से, बट हैव ए फनल, एक फनल शेप में होते हैं. ओपनिंग विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज. The release by an ovary goes into the oviducts through its funnel-shaped opening. In human beings, one mature egg is released into the oviduct every month by one of the ovaries. Right? The fertilization of egg by a sperm take place in the oviduct. 2 oviducts connect to a bag-like organ called ureterus, और जिसको हम ओम बोलते हैं, यूट्रस जिसको हम ओम्ब बोलते हैं. एट देयर अदर एंड, जिसके ओम्ब को हम देख सकते हैं यहाँ पे. यूरेट्रस आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज यूरेट्रस. राइट? दिस प्लेस इज यूरेट्रस एंड दिस इज ओवरी. एंड कंटिन्यू, यह जो है इसमें रिलीज करता रहता है एग्स को. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड एग सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन.
The sperm made in testes of man are introduced by penis into the woman's body through the vagina. The sperm enter into the vagina, pass through the ureterus, and then go into the oviduct. The tail of sperm helps them to move and reach the oviduct. If at the same time the ovary of woman release an egg, then this egg also goes into the oviduct. One of sperm enter the egg. The fusion of sperm with the egg is called fertilization. A sperm combine with egg in the oviduct and fertilize it to form a zygote. डेवलपमेंट ऑफ एक एम्ब्रियो कैसे होता है, इसको भी समझने के लिए हम इस फिगर को देख सकते हैं. हाउ ए बेबी ग्रो, हाउ ए zygote grow and develop into embryo, and how a embryo develop into a new baby. Zygote, to make a ball. Dear student, I will send rest part of this chapter in part second. Thank you very much.